Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this week we have started chapter number 8, that is the thermal properties of matter, in which we have studied about the temperature, heat, measuring scales of the temperature and thermal expansion. So starting from the temperature, that what the temperature is. So temperature is the average kinetic energy. How can we define the average kinetic energy of molecules? We know that when kinetic energy is here when the molecules are in motion, means that moving molecules or moving particles have the kinetic energy. So the formula for the kinetic energy is half mv square. There are three types of the kinetic energies, that is vibratory kinetic energy, rotational kinetic energy, and translational kinetic energy. Vibrational kinetic energy is possessed by the solids, although rotation is possessed by the liquids, and translation kinetic energy, in which the atom permanently changes its position from one place to another place and shift the position, that is translational kinetic energy, that is possessed by the gases. So by adding all these three kinetic energy, we'll get the average kinetic energy. It is not a measure of heat, means that there is a lot of difference between the temperature and heat. Heat is actually the degree of transfer of energy. Heat is what? Transfer of energy, and temperature is the degree of hotness and coldness. Means that these two are the different things, and we have a different parameters for measuring it. For temperature, we have scales, that is Kelvin, Fahrenheit, and degree centigrade, and for heat we have the joule. So measuring temperature, that how can we measure the temperature? We use a thermometer to measure the temperature. Temperature rely on expansion, means that we use the temperature scales for the thermometer. Thermometer is used for measuring the temperature, and thermometer it depends upon the expansion, means that we use alcohol or mercury in the thermometer, and that expand on heating and contract on cooling. Thermometer use expansion and contraction to measure the temperature, right? Temperature scales. For temperature scales, there are three temperature scales. For every temperature scale, there are two fixed points. We call that a reference point. One is the hottest point and one is the coldest point. For first of all, we are discussing about the Fahrenheit. In Fahrenheit, which was discovered by the German physicist Daniel Gabriel Fahrenheit, freezing point is 32 degrees centigrade and 32 Fahrenheit, and boiling point of water over here is 212. So the second is the Celsius scale. Celsius scale was also called as centigrade, that was discovered by the Swedish astronomer Andreas Celsius. In here also we have the two reference point, the coldest and the hottest. Coldest is at 0 degree centigrade, while the hottest point is 100 degree centigrade. Coldest point is the point whether when the water converted into the ice, and hottest point is the point when the like boiling point of the water. Now the third is the Kelvin scale, in which we take the 373 Kelvin as a boiling point and 273 as a coldest point. There is no degree or symbol because it does not vary, changes based of the location, means that it is the absolute temperature, and thermodynamic temperature can be used anywhere. And we can motion stop, the lowest possible temperature you can go is minus 273, means that in this temperature we can go at the level minus 273 degrees centigrade, and it is the SI scale which can be used internationally. Here are converting formulas of temperature, that how can we convert the temperature given in one scale. So we have done in detail in our class that how Celsius scale is converted to the Kelvin. Here is a formula that temperature in Kelvin is equal to temperature in degree centigrade plus 273. Now converting this to Celsius to the Kelvin, to the Kelvin to the Celsius, it will take the position of degree to the Kelvin and Kelvin to the degree, and here plus sign is converted into the minus sign. You have the exercise as well here, that is convert 273 degree to the Kelvin. So from Kelvin to the Celsius, convert 338 Kelvin to the degree. Now converting Celsius to the Fahrenheit.
So you have the formula that temperature in Fahrenheit is equals to 1.8 और 1.8 कैसे है हमारे पास, हमने 5 डिवाइड बाय 9 किया है ना, जब हमारे पास 5 डिवाइड बाय 9 आता है तो आप जब 5 डिवाइड बाय 9 करते हो तो आपके पास आंसर आता है 1.8। अंदर हमारे पास आ जाता है इन ब्रैकेट्स डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसी तरह हमारे पास इसी फार्मूला को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास फ़ारेनहाइट इंटू द डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और इसमें हमारे पास वही हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। Here you have also the assignment that is 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और यहाँ फ़ारेनहाइट टू द सेल्सियस 147 फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे या डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। Now here we are discussing temperature and energy transfer। एनर्जी ट्रांसफर हमारे पास क्या है और टेम्परेचर, इन दोनों का आपस में कैसे हम लिंक टुगेदर करते हैं। तो कहता है व्हेन यू होल्ड एन आइस क्यूब द आइस मेल्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, कि जब आप हाथ में एक आइस क्यूब लेते हैं तो वो मेल्ट करता है। क्यों मेल्ट करता है? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है। एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमारे पास एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। इस वक्त हमारा हाथ जो है दैट इज द हॉट बॉडी, और हॉट बॉडी से हमारे पास कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है, और ये तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम हम गेन नहीं कर लेते। थर्मल इक्विलिब्रियम गेन करने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो बॉडीज हम ले रहे हैं तो दोनों बॉडीज का सेम टेम्परेचर आ जाए। जब तक हमारे पास दोनों बॉडीज का सेम टेम्परेचर नहीं आता तब तक हीट ट्रांसफर करती रहती है। तो अब वो क्या कह रहा है कि हमारे हाथ से आइस क्यूब की तरफ एनर्जी जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। द पार्टिकल्स ऑफ योर हैंड आर मूविंग फास्टर देन दोज ऑफ द आइस क्यूब। हमें ये भी पता है कि जो हॉट बॉडी होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड बॉडी। तो हमारे पास जो हमारा हाथ है वो गर्म है तो और आइस क्यूब इज अ कोल्ड, सो हमारे हाथ के जो पार्टिकल हैं दे आर मूविंग फास्टर, मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो कहता है द पार्टिकल्स ऑफ योर हैंड कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब एंड कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द आइस क्यूब टू मूव फास्टर, कि हमारा हाथ कोलाइड करता है आइस क्यूब के साथ और आइस क्यूब के पार्टिकल्स को इस बात पे आमादा करता है और उन्हें एनर्जी देता है कि तुम लोग भी क्या करो, जल्दी जल्दी से मूव करो। उन्हें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हेन द आइस क्यूब पार्टिकल्स मूव फास्टर, जब वो फास्टर मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कोलिजन होती है, तो हमारे पास आइस क्यूब का जो होता है टेम्परेचर वो राइज हो जाता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा हमारे पास आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? Now, the energy transfer between two particles of the object due to the temperature difference between two objects is called heat। कि हमारे पास हीट क्या है कि जब हमारे पास दो बॉडीज हो और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो और उनके दरमियान में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो, दैट इज कॉल्ड हीट। उसे हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज गोज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। वही बात कि हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी टू द लोअर टेम्परेचर। दिस हैपन अनटिल द इक्विलिब्रियम रीच। ये तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, कि हमारे पास थर्म मीन्स हीट, इक्विलिब्रियम मीन्स बराबरी की सतह, के हीट हमारे पास बराबर हो जाती है। द सीट में फील कूल एट फर्स्ट बट योर बॉडी विल वार्म अप अंटिल दे रीच द सेम टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि हमारे पास बच्चों यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। आप एक जगह पे बैठते हो, सर्दियां हैं, तो आप जहाँ पे बैठे हुए पहले तो वो जगह ठंडी होती है, लेकिन कुछ देर बाद आपकी बॉडी से हीट निकलती है और वो उस जगह को गर्म कर देती है। ऐसे ही होता है ना, और आपकी बॉडी को उस हीट का टेम्परेचर सेम हो जाता है। जब तक वो सेम होता है तब तक हीट हमारे पास ट्रांसफर होती रहती है, और जब सेम हो जाता है उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब वो कहता है हीट जो हमारे पास सीट ने गेन की वो उतनी होती है जितनी आपकी बॉडी ने हीट लॉस की, मीन्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वैलिड होता है। क्लियर बच्चों? नाउ यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट, क्या हम हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बच्चों हम हीट को कैलोरीज या जॉउल्स में मेजर करते हैं। यूजुअली हम इसे जॉउल में ही मेजर करते हैं। अब कहता है 1 कैलोरी या 1 जॉउल कितना होता है? तो कहता है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 1 डिग्री सेल्सियस। के हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर का राइज करती है, कितने का? 1 ग्राम आप लिक्विड लेते हैं और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज आता है। सिंस हीट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट ऑफ जॉउल्स आर ऑफ्टन यूज। कहता है हमारे पास हीट में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हम जॉउल्स भी यूज करते हैं। कहता है 1 सेल्सियस इज इक्वल्स टू 4.2 जॉउल्स। ओके, होप सो इट इज क्लियर, and this is all which we discuss in this week. Thank you.